certain things in this document so that to be able to guide you, more, so that you may not have, confusion going on. So I've written it in a very explicit manner so that you people, exactly know what you have to do while preparing for this particular, paper. Now, this is a summary of preparing for this particular paper. This is a summary, and this summary you need to keep in mind. Okay, जो preparation है, we need to use 3 strategies, for preparing for this particular paper. उसमें हमने vocabulary memorize करनी है, वो वाली strategy है. साथ में हमने guided writing, we need to know about it and we need to practice. And then there is also the strategy of, reading rules from grammar, attempting exercises, और उसके बाद, this is a 3-dimensional strategy that you need to adopt while preparing for this particular paper. Ab, kyunki today is the first class, so first class is always a kind of orientation class, right? Just a minute, let me close this chat box. Okay, let me show you the actual paper so that you also can be able to physically see how these questions come in the paper. सबसे पहले ये बताएं, आप में से किसी ने चलें. But anyhow, let us also physically see the paper. So, I am sharing a paper. Let me see which paper that is that I'm going to share with you. Yes. Okay. Can you see it on the screen? Is the question paper visible? Okay. अब देखें इस क्वेश्चन पेपर को जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे. Usually, because the question paper or the paper is of 100 marks, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि 100 marks में से 20 marks आपका objective होता है, and the objective section part 1 is given to you for some specific time, and most of the time their objective part is also not online, is not available, because then that is taken, though people also made it available and you can also go through it. So this is a subjective part. 20 marks क्योंकि हमें पता है that 20 marks, and at least now we need to know that 20 marks is included to synonym and antonym, means कि जो आपका objective section है, that is exclusively based on your practice of memorizing vocabulary lists. ठीक है. फिर उसके बाद starting with the subjective section, जिस तरह मैंने कहा, पहले 2 questions को आप देखें. Question number 1, 20 marks, where you will be asked to write a précis, right? तो 20 marks का आपका précis का question आएगा. आप, it's a guided writing question, जिसके लिए हम पहले डिस्कस करेंगे, समझेंगे, एंड देन प्रैक्टिस करेंगे कि व्हाट इज अ précis होती क्या है, लिखते किस तरह है इसको, or for example how to read the passage, how to extract the information from the passage. Likewise, when it comes to, for example, extracting information, then how to make the rough draft and writing things in points, and then after the rough draft converting it into a neat final draft of writing a précis. अच्छा, आप में से किसी ने précis की प्रैक्टिस की है? Do you have any knowledge about this guided writing skill? précis, I am asking.
Okay, so it's a kind of mixed up kind of answers I have. Means some of you have, some of you do not have the practice of it. But as I have to take all the class with me, so we will start right from the scratch when it comes to each question. So particularly Prezi, because Prezi is a guided writing which has not been usually practiced by students in their academics. Students do, practice writing summary, but writing a summary and then writing a Prezi, though Prezi itself is also a summary, but it is different than writing ordinary summary, जो हम इसको discuss करेंगे at this point in time, क्योंकि today is the first lecture, so this is the course orientation. हर एक चीज के बारे में मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है? जो हमारी प्रैक्टिस होगी in these lectures, we will discuss rules related to Prezi writing. Then we will discuss rules क्या होंगे जो हम डिस्कस करेंगे कि Prezi क्या है, Prezi किस किस्म का क्वेश्चन है, इसमें क्या रिक्वायरमेंट है. उसके बाद जब आप Prezi अटेम्प्ट करेंगे और पैसेज को रीड करेंगे, तो रीड करते हुए आपने किस स्ट्रेटजीज के थ्रू आपने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है. फिर उसके बाद वंस इट कम्स टू राइटिंग द Prezi, सो हाउ टू राइट दैट Prezi, और फिर हम उसको क्या करेंगे, वी विल डू इट first of all by starting with some general passages, and then we will start doing it with reference to these previous exercises in this paper. This is 2020 paper, I think. Okay, ठीक है? So this is guided writing. इस guided writing के लिए जिस तरह मैंने कहा कि I need to have the practice of attempting previous papers. जब मैं after these lectures, whenever I will be preparing, so my preparation will be on the basis of my practice attempting questions from the previous papers. Okay, उसके बाद question number 3 जो है objective में, which is basically question number 2 subjective में, which is basically question number 2 in the subjective section, that is again related to guided writing. देखें, guided writing is also of 20 marks. Well, are you asking about this slash on the top of E? ठीक है, this slash on the top of E, it's Prezi, P-R-E with slash C-I-S without E. It is the basic term, right, that has come from Latin, Prezi. वैसे हम जब इंग्लिश में इसको लिखते हैं तो इसके साथ हम ई लगाते हैं, C-I-S-E, precise, Prezi, right? उसमें ये slash नहीं आता. So whenever somebody write P-R-E with this slash C-I-S, so this is that actual term which have come from Latin and now is used in English. Prezi, Prezi. ठीक है? And then जब भी, for example, ये टर्म होगा, इसको आप प्रोनाउंस करेंगे Prezi, Prezi. जब इसके साथ ई आएगा, so that is precise, precise writing. Precise अब जनरल टर्म भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमने आपसे precise नहीं लिखवाना, हमने आपसे Prezi लिखवानी है. Prezi is that particular format, right? Anyhow, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखें. ये गाइडेड राइटिंग के क्वेश्चन है और we will discuss it in detail कि what is a passage comprehension. पैसेज कॉम्प्रिहेंशन में रिक्वायरमेंट क्या होती है एग्जामिनर की. पैसेज कॉम्प्रिहेंशन जो क्वेश्चन है उसमें बेसिक काम आपका क्या है, टू answer the questions at the end of the passage. That is basically what you are required to do. लेकिन it's a test of both your reading and writing skills, as a Prezi is also a test of reading and writing skill. तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन सा टेस्ट है रीडिंग एंड राइटिंग का. फिर उसके बाद वी विल डिस्कस स्ट्रेटजीज कि कौन सी इफेक्टिव स्ट्रेटजीज है विद विच वी कैन अटेम्प्ट एंड अप्रोच दिस क्वेश्चन. आया हम पैसेज को पहले पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पहले, पैसेज को बाद में पढ़ेंगे. ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स वी विल डिस्कस. फिर उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस Prezi में पैसेज कॉम्प्रिहेंशन में किस किस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, और हर एक किस्म के क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन हमने पैसेज से लेके लिखनी किस तरह है. यानी फॉर एग्जांपल हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस,
as we have clue based questions, as we have inference based questions. Inference based questions के different categories हैं, examination based inference questions, deduction based inference questions, speculation based inference question. इस सब को हम with example discuss करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के टाइप के हिसाब से ही आपने आंसर लिखना है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि जब हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे विद रेफरेंस टू क्वेश्चन, सो व्हाट हैज टू बी द वर्ड लिमिट for marks or 4 marks. Likewise, what has to be the grammar, what has to be the structure in writing the answer, and then we will discuss it with reference to attempting these previous exercises. ठीक है, तो हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद जिस तरह से हमने डिस्कस किया 40 मार्क्स के आपके ये दोनों क्वेश्चंस रिलेटेड टू गाइडेड राइटिंग, और जो गाइडेड राइटिंग क्वेश्चंस की प्रिपरेशन है दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन your practice. With practice you need to develop your guided writing skills with reference to these two exercises, these two questions. फिर उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर पे देख सकते हैं कि अब ये ग्रामर पोर्शन के क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन 4 टू क्वेश्चन 7, ये ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। इन ग्रामर के क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इट इज अ क्वेश्चन दैट कम्स इन द वोकैबुलरी मेमोराइजेशन। जिस तरह हमने डिस्कस किया कि वोकैबुलरी के 20 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का होगा और 10 मार्क का क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में भी होगा, जिसमें से आपको लफ्ज दिए जाएंगे और वो लफ्ज आपने सेंटेंसेस में यूज करने हैं। And these words can either be related to pair of words or idioms or phrasal verbs. Phrasal verbs भी idiom की एक कैटेगरी है और वो भी आप कोशिश करें कि उसको प्रिपेयर करें। So this question number 6 comes in the first part of the preparation, that is memorizing. उसके अलावा जब अगर आप इसको देखें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 is in 2 parts, and question number 7. क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको it's the exercise of 10 marks where you need to correct sentences grammatically. In the sentences there will be grammatical errors. You need to identify those errors and then you need to correct those errors. ये grammar की exercises, what strategy we will use, I usually adopt is कि जो previous year 6, 7, 8 years के papers हैं, उसके इस grammar exercises को हम discuss करेंगे, हम attempt करेंगे और फिर उसके बाद discuss करेंगे कि ये किस किस which is related to that particular mistake. क्योंकि discussing whole grammar may not be possible कि मैं grammar start करूं और उसको discuss करूं, लेकिन we will approach grammatical mistakes that come frequently, ताकि उनके जो related rules हैं वो आप जरूर पढ़ें। Likewise, while discussing these grammar exercises, you will also come to know how many different types of grammatical errors can come in sentences, so that you can be mentally prepared. And what my practice and my observation and experience is कि जब students at least 10 years paper में से ये grammar mistakes करके उसको understand करके कि which type of mistake that is, so they in one way or another has the preparation for their paper, क्योंकि जो आपके पेपर में mistakes आएंगे वो related to these different sorts of mistakes जो आए हैं। sentences मुख्तलिफ होंगे, mistakes की categories वही हो सकती हैं। so attempting the actual exercise will prepare you for it. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 सेक्शंस में है जो ग्रामर से आया है, उसमें से आपने पैसेज को जो है पंक्चुएट करना है। We will talk about punctuations, we will discuss the rules of punctuations, ठीक है, and then we will discuss the very important punctuation marks and their rules, and after discussing the rules, we will attempt previous 5-6 year paper this question, and I will ask you to punctuate it, and then I will solve it in the class and will explain कि क्यों यही वाला आएगा, दूसरा क्यों नहीं आएगा। So likewise ये एक हम प्रैक्टिस करेंगे, and while discussing punctuation and then attempting previous year papers 5, 6
यस पेपर्स, तो उससे आपको काफी अंडरस्टैंडिंग इन पंक्चुएशन के रूल्स की आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देन वी विल आल्सो डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज राइटिंग द करेक्ट प्रेपोजिशन। आप प्रेपोजिशन के लिए आपने प्रेपोजिशन के रूल्स पढ़ने हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है एक्सरसाइजेज जितने भी 5-6 ईयर्स पेपर्स में प्रीवियस आए हैं, वही एक्सरसाइजेज जो है हम अटेम्प्ट करके उसको गो थ्रू करेंगे, ठीक है। एंड देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 which is related to the translation of a passage in Urdu to English। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे the basic rules of translation and then the rules with reference to attempting these previous exercises। so these are the questions। देखें यही सारे फिजिकल क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपका ग्रामर पोर्शन है, जिसमें से आपका गाइडेड राइटिंग पोर्शन है, जिसमें से आपका वोकैबुलरी मेमोराइजेशन पोर्शन है। एनी क्वेश्चन अभी तक, so that then I go to the other part of my discussion today। well शाज़ेब, part 1 जो है that is given to the candidates for some time, for around 20 minutes or 15 minutes, and then that is taken. That is the reason most of the time getting hold of a copy of part 1 is not very possible। तो इसीलिए part 1 easily होते नहीं है। हालांकि ऑनलाइन कुछ कुछ पेपर्स के part 1 है, क्योंकि वो MCQs है। हाँ शाज़ेब, बिल्कुल part 1 जो है ऑब्जेक्टिव है और MCQs टाइप है। अगर synonym है, so you will be given a word and with the word you will be given 4 options। yes, MCQs type objective that is। if for antonym you will be given a word, so with the antonym you will be given 4। part 1 के 20 मार्क्स हैं शाज़ेब। वेल शाइस्ता, गाइडेड राइटिंग के जो क्वेश्चंस हैं, ये तमाम क्वेश्चंस as I divided it in parts, we will discuss it in detail। मैंने सिर्फ आपको शो किए हैं ये क्वेश्चंस कि देखें जो गाइडेड राइटिंग के क्वेश्चंस हैं ये 40 मार्क्स के आते हैं, और फिर ये अभी हमने इन डिटेल डिस्कस करके प्रैक्टिस करनी है। इसकी प्रेसी राइटिंग को डिस्कस करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। लाइकवाइज फॉर एग्जांपल हमने जो है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज डिस्कस करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अच्छा, मीनिंग ऑफ गाइडेड राइटिंग, देखिए गाइडेड राइटिंग का मतलब ये है कि व्हेनेवर यू आर गिवन ए पर्टिकुलर सिचुएशन and then in that particular situation you are asked to write a particular text। what I mean by particular text is, for example, I give you a situation and I ask you to write a letter। I give you a situation and I ask you to write a report। I give you a situation and then I ask you to write a dialogue। I ask you to write an essay। I ask you to write a paragraph। I ask you to write a précis। ये तमाम डिफरेंट सिचुएशन है, हर एक सिचुएशन में आपने एक पर्टिकुलर टेक्स्ट लिखना है। दैट इज नोन एज गाइडेड राइटिंग। गाइडेड राइटिंग मींस राइटिंग विद रेफरेंस टू द गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस। बिल्कुल बिल्कुल नायाब, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन हर एक गाइडेड राइटिंग का अपना अपना एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट आपको पता हो। बिल्कुल जिस तरह प्रेसी है, इसके अपने रूल्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, आपने अंडरस्टैंड करना है और फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप प्रेसी उसी हिसाब से लिखें। जिस तरह से फॉर एग्जांपल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, अगर क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन नंबर 1 की मिसाल लूं, इसका आपने आंसर लिखना है विद रेफरेंस टू क्वेश्चन। रूल क्या है फॉर आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑफ ए पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, उसी रूल के हिसाब से आपने जो है क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक है। वेल शाज़ेब, एट द मोमेंट वेल I think I have 1 or 2 objective part that I've been able to at least download from a particular website। let me see if I have, so I can show it to you। लेकिन
जो आपने फॉर्मेट है वो फॉर्मेट वही होगा आपका। मैं आपको शो भी करता हूँ ये बुक में जिसमें आए हुए हैं, सो यू विल देन बी एबल टू विजुअलाइज इट। अच्छा, अब जिस तरह हमने डिस्कस किया मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं। नाउ फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर प्रिपरेशन, हमने ये डिस्कस किया कि फॉर प्रिपेयरिंग फॉर क्वेश्चंस यू कैन use any effective material or any effective list as you feel like, right? But for your ease, so that you can have one particular source, so that those for whom it's difficult to get hold of the book, so then I will also share some materials with you. Number one, अगर मैं guided writing की बात करूंगा, या if I talk about guided writing, for guided writing you can use any book as you feel like, but this is one of the books, a very old one, which is available with me in soft, that I will share with you, right? क्योंकि guided writing का basically आपने practice करनी है with reference to the previous exercises. Is the book displayed on the screen? Can you see it? अब देखें, आप इस बुक के कंटेंट देखें. It's a book that basically is based on this paper and the solution of these previous papers. प्रिसाइज राइटिंग के इसमें रूल्स भी हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के रूल्स है, पेयर ऑफ वर्ड्स इसमें है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस हैं, इन द ब्लैंक्स है, की वर्ड्स एंड सिनोनिम्स है, और ये मुख्तलिफ पेपर्स के अटेम्प्ट है इसमें, राइट? your preparation, you need to attempt a passage. Yani for example, I have attempted this passage, and then after the attempt, for my own practice I'm talking about, then I need to check it with the solution. देखें solution भी है, so are and how accuracy has to be written. Likewise, I'm just scrolling down the book. You can then read it in detail with the passage of time. This book you can use for preparation with reference to guided writing. लेकिन this is not the only book. You can have any good book, because books in hard are available. You can go to a good bookshop and can ask him to give you